Okay, let's get the next one ready. Muted. Done. Order submitted. No, news in 3 minutes. Anybody in a trade? News will do it. Just telling you. It's medium impact.
All right, good morning, everybody. Tuesday, April 29, 9 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys join us at superareas.com. Welcome. Areas are updated. First look at Forex Factory. We had news at 8:30, 9 o'clock, and most important news is 10 o'clock. 10 o'clock is red impact job openings. They're expecting 7.49. Previous was 7.57. And let's see JOLTS opening, job opening thing. So this is going to be important at 10 o'clock. And then consumer confidence is going to be up or down. Right now, base is up, pressure is down, meaning more chances it could go. Now, if we see the night session are starting to be tighter and tighter, which means uh, market is stable. When you have a huge night up and down, it means things are not. Now, if you see the areas are getting tighter and the ranges are getting smaller, so that has an indication that things are looking good for the economy and now it's stable. When you have a volatility 600 up, 600 down, things are kind of crazy. And let's take a look at what Nasdaq did. And before that, last night we held elections. Canada did a federal elections, and it was your civic and civil duty to go out there and vote. I'm not affiliated by any party. Whoever you voted, if you won, congratulations. If you lost, better luck next time. But in my personal opinion, Trump handed the election to Carney because Trump did those comments, did the tariffs, and the whole Canada kind of shifted from conservative to liberal. So that's what I saw, and I analyzed my own opinion that Trump is the reason why Pierre is not in the office today, and that's the main reason. Trump handing over all those comments, and then they don't want a Trump in Canada, right? So whether you voted conservative, it's just you got to blame Trump. How he kind of called Canada a 51st state, and wrong timing, just wrong timing for Trump to, because 8 years of Justin's, I know it was a bit stale, but Carney should go and thank Trump for doing this. But enough that. Let's take a look at U.S. market. We are more interested in U.S. economy than we are in Canada because the U.S. dollar is stronger than anything. So 19,630 is your entry for night session high. For Nasdaq, 19,410 is your. So I'm updating my daily statistics. So 221 range last night. Right now, where is the price? 19,000. So it's very close to. So your S1 is done. It's following below S1 now. So let's see if it breaks, and 415 to 440. So S1 is officially done. And this is night session continuing. So for Nasdaq and ES, base is down. So what that means is before 9:30, the number that will be coming is the night session low. So right now the price is 55.26. This is still inside the night session. The morning session starts at 9:30. So we will consider nine session by 9:29, and it's still falling. So that means that night session is extending into a downfall. High to go up, low to go high. So expected low will go long, and expected high will go short as usual. So let's see where ES. ES, you have a high of and low for 55.75. Let's put that as a high. And 55.20, let's put as a low. So 75 to 20, 55-point range for ES. Right now, ES is sitting in at the 20 range, so it is at night session low. And that could change if the next half an hour it falls more, that will be considered your night session. So which area? If you're taking an area, maybe S2, because S1 is broken. S2 would be yesterday's S1. If you look at the numbers,
54.97 is yesterday's S1. So this is where we're gonna look for to see where things are. And then, of course, expected low and then extreme low from there. But let's see if it stops at, and if you see the numbers are getting tighter and tighter, 30, 37, 97, 90. So because I'm an area guy, I'll wait for, so let me see which way I will do Nasdaq. Nasdaq. Let me open up my charts first, and then I can log in. Because I have a habit of closing my charts, so I don't instantly go in a trade, because by the time I'm like excited, chart takes 5 minutes to open and connect, and the trade is gone. So if you have it running, you're gonna put your finger in there, right? So whenever I think, oh, it's too good to buy, too good to sell, but two mid bands coming down are kind of done. This one I think missed by a point, and the previous missed by a point. I'm not sure if it touched top of the bar. Yes, this one did. I see a 30-20 top of the bar rejection wick slightly. Yes, I do. Yeah, there's a top of the bar rejection wick. So 2 points or 3 points came from there. But it's okay. We go with the flow. So let's wait for S2 at least for ES. Let me just get my chart so I can give Nasdaq numbers. So 10 o'clock news will really decide the direction of this today's market. Because JOLT opening is really, really important. Okay, let's connect my Apex, Bullocks. Good morning, G. So Nasdaq, I'm gonna go expected low. Not anything before, nothing earlier. I'm gonna skip S2 myself. Whether it stays there or not doesn't matter. But the number I'm picking for Nasdaq S3, even the upper limit is okay. Yeah, upper limit Nasdaq is okay. So 18,960. So I'm gonna go with S3, and because at this speed it could penetrate, and I don't want to take my stop loss, so I'll wait for expected low for Nasdaq and R2 on the upper side. What's the difference? 840 to right now? Yeah, for 840 minus 406. 435 points. If I take 19,400 minus 400 points down to 19,000. Yep. So somewhere. So expected low and R2 for Nasdaq. These are the expected low and R2. Let me double check on 60 minutes to see if there's any support resistance there.
First break could be at 19,150 because that's the 60-minute bottom of the chart. So, and that is the low for the 19,165. I'll keep an eye on that. So 19,165 for Nasdaq to go long. So that's a 60-minute bottom of the bar. So the number for Nasdaq, I'm going in with 19,165. If it goes below, so in between S2 and expected low, that could be my first buy, 19,165. नंबर है लॉन्ग के लिए सी नहीं एक्सपेक्टर और S2 के दरमियान में है क्योंकि गैप बहुत बड़ा है. तो अगर आप देखें मैंने ये नंबर कहां से निकाला है, नैस्डैक का 60 मिनट का चार्ट, उसकी जो बॉटम बार है वो ब्लैक लाइन जा रही है, वो उधर गिर रही है, और वो पिछले वीक का वो भी है, प्रायर वीक का ओपन है. So 19,165, I'm going to keep my eye there. R2 and then below. Sorry? R2 के पहली वाली, क्योंकि मैं सिर्फ S2 19,165 is the number I'm going to attempt to go long at. The cluster is around S. Otherwise, gap is so much, 391 to 18,970 minus 19,400. It's almost 430, right in between it puts us. So if somebody wants to take S2, sure, of course, every area has the same risk, 35 point put I sell and then go for it. But I'm not taking S2, I'm taking 19,165. It could go slightly lower to even 19,145 because the lower band is sitting at 60 minute was 145 right now. So I'm thinking at what is ES? ES lower band. S2 should be strong. Around 5,500 should be okay. Let's see. Eh? Same, ES, MES. So S2 should be okay for ES, I think. Should be okay. I don't see anything. Only if it Nasdaq goes down to 430 minus divided by 5, that would sit 86 points from here. So 55.23 minus 86, 54.37. 54.37. It will put it somewhere near expected low. Nasdaq goes to that point, 19. Of course, if Nasdaq goes to expected low, we can expect ES to go to expected low. But first, we will worry about S2. Let's see if S2 is strong enough or not. But at 10 o'clock, we have news coming in. So SRE का सेटअप बन रहा है 30-20 पे, या नजर आ रहा है लोअर लो हायर लो, उसके बाद देखते हैं इसने वापस ऊपर जाना है या लेकिन पहले 15-10 में भी बन जाए ना, फिर हमें होता है कि 15-10 में अभी दोनों में बन रहा है. So SRE setup is there on ES 30-20. What does that mean? You have a 31-point swing. You have a 9-point retrace, but you don't have an extension. So whenever I say SRES, what does this mean? The price came down. There's a number here, 31. That means price came down 31 points. There's a number here that says 9.5 for my MES. Yeah.
So price came down. This is swing. This is retrace. There's no extension. If you have no extension, it means price is not going to go down. So if you have a black candle to the upside, background changes to green, start buying at the bottom or mid band. So that's called an SRE setup. So the way trend changes is keeps coming down, but if it breaks this number, of course, it possibility that it will keep going down. Now I already can see that if I have a black candle to the upside, I will start going towards long. But of course, you will go long. Both backgrounds have to be green from mid band. Start buying. But if it breaks 21, then you have a trend continuation. So you have a double bottom. That means the previous bottom and the current bottom is the same. And you can see a divergence, by the way. For advanced users, look at the strength on 3020. Did not go down at all. Price is coming down. Strength is not. So the moment you have a white line, you will have a divergence to the upside. So, good morning, G. So Daniel is going to take over. I'll bridge his mic and we'll go from there. Now, night session low is 55.2150 for MES. Good morning, G. Yes, give you mid-band couple of points. Dow is heading towards S1 and gold is nowhere, right in between expected high and expected low. So nothing there is happening.
So yesterday went to 54.93 almost. So let's see what happens today. Is front somebody there? Oh, front pay.
Okay. All right, SRES is working, and now we are going up as per the plan. So when SRES confirmed, both you could take the bottom of the, mid band going up and few points there. I know, because the large triggers are starting to open. So if you look at 3020 large triggers, they're twisted and started to open. So it should turn green any second now. So because on 1510 price was higher high, so probability was higher here. But in 4 minutes, things could instantly change towards anything. It's waiting for the markets to open. And where is stock trading? Neutral, very neutral. Just waiting for his brief to start. So नहीं सर कुछ भी नहीं. Good morning, guys. Good morning. Hello guys, game chill. Hello. Assalamu alaikum, sir. Yeah, walaikum salam, walaikum salam, walaikum salam. Ji, Taimur Bhai. Good morning, Manish. Chelsa, good morning. Hikesh. Arlene, good morning. Abbas, Shaji, good morning. Shindarji, good morning. Ji, Alpaji, good morning. Sunil Ji, Amplify, Vikas, Rizwan, Sakir, Samir, Bhai Manpreet Ji, good morning. Prague, Sayyid Ali Ji, Gaurav, Ashwin Ji, good morning. Ranjit, Jagdeep, Amrit, good morning. Echo, yes, Jason. A little bit echo, yes. Paramjit, good morning. Clifford, good morning. Everybody, good morning. Ji, quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training floor not attended as trading advice. They are just meant to enhance your trading decision, but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always bring your tools, always place your stance, and always ready to accept those losses. Do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first thing you treat. And all the areas we have on superareas.com or on our graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas. Those are just for information and education purposes only. And we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, S&P 500 pressure is down. Retracement of yesterday morning, we had 62 points pushed to the upside, 82, 86 points.
500 both way. Today, high to go low and low to go up would be a good strategy. 10 o'clock, we have job opening in our CB consumer confidence. Remember, consumer confidence means inflation, like consumers are confident to survive or no. So if it goes against the color, red to go up and green to go down, red to go up and green to go down. And then we have our trade goods, not good. Still pushing down. Trade balance is not good. Wholesale inventories are good. Wholesale inventories are in green, but actually it's not green. Price should go down. Wholesale inventories are more than previous numbers. And then we have house price index is in red. Yeah, this is true, red. And actually the market will decide it at 10 o'clock. After 10 and under 100, I would say under 100. That's a good sign. Our market will stabilize, and then our areas will be shorter too. Dow still above PP. Russell 2000 already bounced back from S1 and almost breaking the mid range of our night session range. Nasdaq and S&P are synced, and if you see S&P 500 already hit our night session low. Actually, night session low is 2150, slightly below our S1 area. And S2 today, S2 and yesterday S1 was same. So that's why we'll see if S2 will get a very strong support area. But best is low to go up would be a good strategy. And then we have our other markets are British pound. If you see British pound bounce back up from PP, get inside the value area, but right now sitting at top of the value. And guys, Canadian dollar should go up because of elections and because of the continuation. Canadian dollar should go up. It gets strength, and that's why yesterday we see a push to the upside. Reach to our expected. If you see 100% hit our expected high for the day at 4 p.m. yesterday, and again market went up and again tested at 11 p.m. and again bounced back down. And after 11 o'clock, 11 p.m. we had a big push to the downside on Canadian dollar. And after 3 o'clock, when Euro session started, and it took Canadian dollar to the upside. And Euro, same thing. If you look at the Euro is identical with the Canadian dollar today. Actually, Canadian, British, and Euro all are identical, and they're moving in same direction because against the US. Crude oil is down. Crude oil $3.21. That's, in these days everything is weird. Crude oil we hardly see like 40 cents, 60 cents, 70 cents, and now it's $2-3 of nothing, and $3.21 push to the downside from our high of Sunday high till now. And it's still down. Remember, it's at S1 area, daily S1 area, below value area. But right now we have a retracement and diversion. Remember, we are in a diversion to the upside on our crude oil. FDAX is in diversion to the downside. FDAX right now above PP whole night. It was just testing our yesterday high area 22,600. 22,600 today. 22,600. 219. 608. 219 points pushed to the upside. And right now, again, not much. Gold yesterday went up almost $85 and 80 cents, and right now it retraced back $54.20, and now above PP. So it's just hitting our magenta midline. Copper is up. Copper is in diversion, so diversion to the downside. So copper is above value area. Copper above value area, hit our R2 area. And the silver is up. Silver is going up 73 cents from our night swing after 2 o'clock. I'm sorry, 73.5. That's a big push to the upside on our silver. And
Silver above our 2 mean, we might see our expected high for the day today for a silver. Natural gas was up yesterday, went up to our extreme area. Excuse me. And again today, it gives us a diversion and just kiss right now while we're sitting here. It just kiss our expected high for the day and shoot to the downside. Natural gas, that's a big push to the downside from our high of 15 cents. From in my opinion, this whole 15 cent should be given back after 7 o'clock. If you see, after like 7 o'clock, 6 to 7, and it started bouncing back up. And while we're sitting here, it just gives us 15 cents push to the upside. And 15 cents is big push to the upside. $10,000 upon dollar, and if 15 cents, just imagine how much money is there. And then we have Bitcoin. Bitcoin is in doldrum. If you remember yesterday, I told you 95, 96, 95 area and bottom. The low was our somewhere 91 area, and it's in doldrum. It's not breaking the top. It's not breaking the low. In my opinion, next few months or 2026 December, I'm seeing a big double price for our Bitcoin. Ethereum is not going up. Ethereum is little odd. It went to $1,857, $98, and right now above our area and above PP. And remember, we have a very strong multi-support for Ethereum at our 1810, 1805. For anybody who's trading Ethereum, you must be very careful. Top of the value area, center of gravity of magic band, mid band is there, PP is there, multi-support, and very strong support at that area. Again, guys, S&P, just that S1 area, same thing with Nasdaq, hold by S1 area and trying to push back up at 10 o'clock. We have news, and we'll see 10 o'clock which way the market is heading. We have 67% push, 253 points, mean minimum. We are expecting 100 plus point push to the upside on our Nasdaq, and 25 points push to the upside on S&P 500. Dow is up, Russell 2000 just trying to break our night session high. If these two are going up, definitely they'll take S&P and Nasdaq to the upside. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. All right. Price is around S1. Let's see if S1 becomes a resistance or a support. Time will tell. I know. 30? The area, he has to enable those areas, these charts. You already have it in the center. You already have it, just the numbers are not coming. So, yeah. So it's there, just the numbers are not. I just minimize? Yeah, you can minimize for now. Yeah. This one? No. It's in the middle chart. 30-minute chart. This chart is called 30 minutes. So it's in the middle one. But your numbers are not enabled because you're at the beginning, you don't understand how to trade these. So that's why at the beginning, we don't give anybody these numbers. So this is for those who are not doing anything, waiting. So that's why. 30-20 mid-band worked after getting overbought.
So I'm waiting for at least R1 now, or night session high, 55.73. Yeah, like I just said, we don't give you. Yeah. You just have to do green. आप green to buy रखें, red to sell. वो वाला. हाँ. बिगिनर्स में आपको एरिया दे दिया तो आप मिक्स करोगे, क्योंकि एरिया में आपको रिवर्स करना होता है. ग्रीन में सेल करना, बाय करना, सेल करना होता है, और रेड में बात करके मुझे पढ़ाया कुछ है, दिखा कुछ रहे हैं. तो ये थोड़ा एडवांस यूजर्स के लिए. So 20 minutes we have news, guys. 10 o'clock is important news. Yesterday was no news. Yesterday was no news. What is any reason? Nothing, just there was no economic news. There is a job news. Yes. If you set a mid band, you're done your trade. 2 points are done, 3 points are done. For $100, $50, micro, mini. So you sat at 50 or bottom of the bar for 30-20 is done. So see early opportunities coming. You just have to wait at your number. That white line, everybody, came on 1510 divergence line. I थोड़ा जल्दी close करके, थोड़ा oh shoot करके. It's no problem. क्योंकि मैं भी लॉन्ग में था. There you go. 30-20 divergence failed and went back up. Yeah, so ESP pivot से वापस आएगा शायद, देखें. $15 minutes to news.
यहाँ चैट करना है बॉटम राइट पे, ये मेरे हो गए हैं। ठीक है, yeah, you have to chat with them online. Nasdaq का? Yeah. Okay, let's see.
9 minutes to news. Each place the news, Washington. Sorry? Each place is announced the news. Yes. Forex Factory. What is the office there? It's in your news folder. Okay, first. No, that news announced some area, particular place. Yes. Video lecture 1 for Daniel that you took explains all of that. Four minutes to news.
SRE set up on 3020. Yes. So 1 minute news to go. And let's see. Jolt's opening hai anytime. 40 seconds. every month. Sir, every day. Every day. Good job. Every day. So let's see. There you go. Done, 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 done. Be ready, be ready. It could go anywhere. I was in short at news trading, so hopefully all of you guys made some money. I was in short. हैं? नहीं ये इस पर कर रहा हूँ ना, तो आंखें बंद करके 5 माइक्रो 2 माइक्रो 3 माइक्रो टेक प्रॉफिट में ईए में कर सकते हैं, बीए में भी कर सकते हैं. ये वाली न्यूज़ ठीक थी. सर्टेन न्यूज़ आती है वो तो anyway news is done. So let's look at the impact of the news first. Is it gonna? So less people are looking for jobs. So 719. 719. So it's lower than previous, lower than forecast. So we're gonna head towards down. Technically. So there you go. This is your news impact. And it And will be the high, yeah. so now we will appropriately plan our stuff. Go down. News volatility. It's approximately came back to where it started. So let's see.
So what's the consumer confidence? It is low, very low for US for inflation. But we go along with the trend, see how it goes. In about 2 minutes, things will settle down. In the spike, it went from 51 to 37 and shot back up. Let's see. Still, yeah. Candidate, how to change the color? Yeah. Why is the on all blue? Okay. Give me a second. Let me change your template to tools, workspaces. It will come. Give it some time. No problem. 2 minutes. Bad news, market shoots up. Night session high, it's coming very close to.
Let's see R1. So Still coming. Should come. you're in March contract. That's the problem. So you are trading right now. You have to be trading June. So I will fix that right now for you. So it'll come shortly. Let me save. Yeah. I save before closing. I save. No, you don't save. It will, Same way, huh? yeah. It will. Me. Give me a second. This is still the same. This is not for you. Don't. Otherwise, you're gonna get the. Yeah. I just have to fix your templates. Can you give me any desk? I will log in remotely. Any desk. Yeah, so I will fix it. Give the address. Yes, please. 1018 1 second. 1018. Yep. 508 Yep. 85. I just put in, right? Yeah, if you accept it, please. वो हर ब्लैक कैंडल के साथ ऊपर या नीचे हो जाता है. You restart your Ninja and let's see. I'll do that.
Give me a second. Not enough RAM for this system. You need at least 16 gig. This is only 8. 8 GB. This an i5. You're going to have very hard time. This is after in about 5-10 minutes. Can you go see Daniel? He has to fix one thing inside quickly. Okay. Yeah, because but this laptop is not designed for
नहीं मैं किसी ट्रेड में बढ़िया की हाँ आप पास हो गए ना पर्डिया में। तो अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। डॉक्यूमेंट हाँ वेबसाइट पे जाएं, अपना ड्राइवर लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें तो आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा। अब आज ये 2 ऑप्शन देंगे। 3000 आपने कौन सा किया? 3000 वाला। वो आपको ऑप्शन देंगे 3000 लेना है या 3000 को बेस बनानी है। तो अब आपके पास ऑप्शन आ गया, लेकिन अभी 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ड्राइवर लाइसेंस, यूटिलिटी बिल और एक डॉक्यूमेंट वो देंगे आपको। तो ये कर लें तो आपका हो गया। दैट्स ग्रेट। नीचे उतर आनी चाहिए मार्केट आहिस्ता आहिस्ता। लेट्स सी। ईएस का पीपी जो है वो काफी सपोर्ट कर रहा है, वो बार-बार वहाँ पे पीपी चलता है। मैं अभी देखता हूँ सर। यस वहीं पर 60 मिनट पे खड़ा है। ये जो स्पाइक आई थी ये तो थोड़ी न्यूज़ की आई, but it's coming down pretty fast altogether. Market will fall always faster than there you go, your 2 points from mid-band. If you sold it at a mid-band, you're done your 2 points or more. All you have to do is just wait at your destination. Price will come there, sell, get out, 2 points, done. It's not that complicated, guys. Or bottom, top of the bar when things are coming down. It's not that difficult, and honestly. And that's all you guys have been taught the whole.
बेहतरीन भाईजान, दुआएं। किसका? वो लेजेंड का? आपने ट्रेडोवेट के एग्रीमेंट साइन किए हुए? स्पैम में गई है, स्पैम में गई है, जंक में। आपने साइन अप किया या बाय किया? मुझे एनी डस्ट है, व्हाट्सएप मुझे एनी डस्ट करें, नहीं एनी डस्ट करे मुझे व्हाट्सएप, ताकि मैं रिमोटली लॉग इन कर लूँ। Back to S1. Okay. एक सेकंड दीजिएगा, मैं सिर्फ एनी डस्ट कर लूँ इनका। सॉरी, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? इट इज ट्रू लाइव अकाउंट। जिस तरह आप गए हैं बैंक में और 3,000 जमा कराए हैं, तो देखें आपने 750 स्पेंड किए, आपको उन्होंने दिया 3,000, आपने टारगेट मैच कर लिया, ठीक है। अब आपको दो ऑप्शन है, वो कहते हैं कि 3,000 ले लें, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 माइनस 750, आपको 2,250 का फायदा हुआ। दूसरा ऑप्शन वो दे रहे हैं कि ये 3,000 वहीं रख लें और एनी टाइम निकलवा लें, ठीक है, और इसके ऊपर ट्रेड करें। तो ये ऑप्शन है आपका। आपके पास 3,000 का अकाउंट अब लाइव अकाउंट आ गया। आप जैसे अभी लगाएं $200, शाम को ले लें, तो अब आपका एक ट्रू लाइव अकाउंट बन गया। तो कंग्रेचुलेशंस बाय द वे, लाइक आपका मीनिंग इट्स अ रियल अकाउंट, राइट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? सिर्फ 750, अब आपके उसको मिल रहा है उसके अगेंस्ट। It's real US dollar, but he invested 750, but he went through the challenge of per year. सर 2-4 दिन में आप भी आके यहाँ सारों को बता दें कौन सी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। कल जतिन भाई आए थे, आ जाओ। Because I think it's again to do with discipline, right? So how many steps before you have to he like this is like, I mean, at least give yourself 3, 4, 5 months before you do attempt his. Because if you spend 750 and you slip, you will stop trading for a while. So I gotta put you through the $15, $20, $40 accounts first before you attempt the highest exam. Because it's not so straightforward, you know. It looks easy. Yes, I will put in 750, but you know, you have to trade for a certain amount of time and all of these things. So, but that's the end result. You don't invest your own money. You use other people.
once you make 3,000, they can have a chance to withdraw whatever. Yeah, you have 3,000. They can give you the full 3,000 too. That's not a problem. It's just in this industry, we never ask you to invest your own money. First, you learn in a sandbox. You go up, go down, go up, go down, and then when you're ready, right? So this looks good. He passed, but ask him how many times he fell down, up and down, legends, apex, bull knocks, and then he figured out, hey, this is what's working for me, you know. Because an average person fails at least 6 tests before they get a hang of it. And that's an average. 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. That is like around $300 you will lose, but that means you have lost $7,500 of somebody's money. Yeah. Right? So, or your own if you put in 75, right? So. तो यार ये इंटरनेट यहाँ का बड़ा मसला है. I gotta go inside and fix it. Internet here doesn't work. So once you buy the OTM, other people money, they can still trade on the practice one? Yeah. No problem. That is actually a practice account in my opinion anyway. Oh. Right? So. You just have to tell yourself, can I make consistently $200 to $300 a day? Minimum 100. If you can go end of the day, let's say by 12 o'clock, from 9 to 12, you went green. So, and then you can do this for, let's say 20 days. That means you're ready to go to step 2. Oh. That every day I sit down, I know, like, that's why I was shouting, hey guys, 4 minutes, 5 minutes. Nobody looks at news. I have to, because so many people are listening. If they're in a trade, some people are trading real money. Some people are trading sim money. Some are trading stage 1, stage 2. So they have to be very, very careful when the news comes. And you all saw the spike, right? Yeah. If you were in the right direction, yes, you make money. But it could, news was good, market still went up, shot up. And then it's slowly coming down, right? So that how to deal with these things, you will have, and this is not a one-day job, guy, right? That, okay, every day I come, it's a new day for me. I don't know what's going to happen. Trump is going to speak. Interest rate is going to happen. Jobs. So every day I am coming, I'm like, okay, whatever I've done as of yesterday is 0. I made money, I lost money, everything, but now it's a fresh day, and my target, every account, I want to get $75 to $100. That's my goal, because I have 70 plus accounts, right? So if I take $50 times 70, that done, right? So $50, $60, $100. I'm not going $500 per account. That's just impractical. But अभी देखें न्यूज़ गिरी थी, मैं शॉर्ट में था, $75 बन गए, ठीक है, 2 माइक्रो से. तो 2 माइक्रो से बने $75 MES से. इतनी 75 बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए थे? 7.5 पॉइंट. ATM लगाई यार कि भाई 10 पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट चाहिए. अब 75 times across, let's say you have 20 accounts, right? You're done pretty much your target. So, and you guys are living in the one of the luckiest time. 5 years ago, actually more 4 years ago, I sat where Mr. Irfan sits. Daniel sits here. I joined through the Red FM radio as well. So because I do stocks and futures, and I sat here and I'm like, this is great. But that you had to put in your own money. There was no option for you to mess it up, because you went to CIBC, RBC, Scotia, you wired the money, let's say $1,500.
you were scared to take a trade just to examine, because sim is different. Your emotions are not attached. And then you're like, do I take S1 or S2 or S3, right? And you confirm 10 times, hey, is there a divergence, what my colors are, and you jumped in. Today, you can go into Apex, get an account for Bullnox for $15 and jump in, and your risk is to learn. But eventually you will get to his own. So here's the example. Again, different people are different stages. He just passed Perdia, which is the highest level of exam and most expensive. There's one after that, it's called FTMO, but that's $1,200. So you start with Apex, Legend, Bullnox, and then you go into Take Profit. The next is Perdia. Once you cross Perdia and you can make money, hey, he can take that 3,000, withdraw it, open up a real broker account. He doesn't have a test, but it's $3,000. Now he can build on it slowly. But back 4 or 5 years ago, you had to put in your own money. There was no luxury for you to, can I use other people's money to get in? You graduated from here, and Daniel used to not give anybody broker's phone number for 3 months. 3 months is what you require to finish the system, in my opinion. If I ask you, can you plot what is an overbought? All I have to do is ask you, what is overbought on ES 3020 right now? Give me a number. If you can't read that number, it means you lack skill. So the number is right here. Yeah, right here. This is the overbought line here on 3020 chart. So how many buyers are in the market? How much percent market has gone overbought? Right? These are overbought. The relative strength index is right here. If I ask you what the magic bands are, these are the lines that mostly nobody uses. These days, if I ask you, give me the numbers for expected high, you should be reading somewhere around here. So back in the day, you had to sit down, write these numbers. Hey, so lucky batch. Right here. Yeah, this number. Expected high is around. So you have R1, R2 expected high, right? So these are the numbers. So few things again. Well, what is the strength right now? Things are getting severely overbought in 3020, and look at the swing. How crazy! I have some. Did he sign the trade away agreement? No, but in order to sign it, you need to get the user. See, the problem is, I think he has to chat. Something is messed up. Yeah, he has to wait, man. Sorry, bro. I doubt I could help. Yeah, we need a username, password. So market shot up 26 points just right now. So before 3 months, give yourself hard time. Like, don't be too hard, because remember, the trader beside you may have lost 500 accounts. You have no idea, right? And then we don't know what his backstory is. It looks good. He passed Perdia, right? And your mind is saying, hey, yaar, maine Perdia pass kab karna hai? Kar lenge, no problem. पहले तो आपको उसमें से गुजारना है, जो मैं कहता हूँ गन्ने के जूस के मशीन में से, और लेजेंड में से. वो इतना मुश्किल होता है, देखना आसान है कि भाई जी 5 दिन में कर दिया उसको. अभी तो उस ब्रिज से गुजरना है आपको, डिसिप्लिन सिखाने के लिए. वो ऐसा, और उसके बाद राउंड 2 है उसका, और वो इतना सख्त डिसिप्लिन है कि आपने 2 पॉइंट देखे, लेने हैं. ये नहीं है कि भाई जी ट्रेड जा रहा है, और लाइव थ्रेशहोल्ड में आ जाता है काम. उसके बाद लाइफ जरा इजी होती है. सर आपने खुद सीखना है, मैं आपको नंबर देने हैं. मैंने क्या सिखाना है? मैं यही कहता हूँ भाई, ग्रीन टू बाय, रेड टू सेल, एक ये, और दूसरा अब हुआ ये कि मेजॉरिटी अगर 930 से मैं सिर्फ मिड बैंड करूँ, 4 काउंट कर लेता हूँ, 4 मिड बैंड चले. अगर आपने 2-2 पॉइंट के भी लिए तो 8 हो गए, तो 2 की आपको रिटर्न गारंटी मिली. बाकी तो नो प्रॉब्लम. सिर्फ वही 1500, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, अपना सिम अकाउंट की मैक्सिमम कैपेसिटी 1500 रख लें, और उसमें देख लें कि आप रोज के बना रहे हैं कि नहीं. जिस दिन आपके 8-9 दिन सीधे हो गए ना, इट मीन्स आप टेस्ट के लिए तैयार हो. ये आपकी वो इनिशियल असेसमेंट है. और 3 मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि अभी आपने 7 मई को देखना है कि इंटरेस्ट रेट वाले दिन क्या होना है. वो एक डिफरेंट दिन नहीं होता, क्योंकि उसने बोलना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या कम करना है, तो मार्केट ने शूट करना है 1000 पॉइंट.
अप और डाउन, हमने डिपेंड करता है ना, लेकिन वो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है गिराना है। बिग बैंक्स जो है ना मार्केट को ऊपर ले जाते हैं आपके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, राइट? सो यू विल विटनेस सीपीआई, पीपीआई, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट। आज जॉल्ट्स देख ली छोटी सी, अब कल कोई न्यूज नहीं थी, राइट? मार्केट्स बहुत स्मूथ गए, राइट? सो these are all part of your, and again, lucky you don't have to draw a single line. Try doing all of this on trading view. Anybody says मैं ट्रेडिंग यूज करता हूँ, एक एक लाइन खुद ड्रा करनी पड़ती है कि मेरी सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, डाइवर्जेंस क्या है। यहाँ तो आपके सामने सिर्फ आपने, आपका ये काम है जी, मैं गया मिड बैंड पे, यहाँ से बाय लिमिट लगा दिया, डन। ये काम रहता है आपका बस। बस अब प्राइस यहाँ आएगी, दो चीज़ें होंगी, या तो वापस चली जाएगी या स्टॉप लॉस ले जाएगी, बस। तो आपने सिर्फ ऑर्डर लगाने होते हैं सिस्टम के अंदर। अब दोनों चार्ट्स ग्रीन है, मैंने मिड बैंड पे ऑर्डर लगाया। डजंट मैटर, जिधर मर्जी चला जाए। तो आपका रूल क्या कह रहा है कि आपने मिड बैंड पे बैठना है, दैट्स द। अब यहाँ से घुसेंगे, आप कहेंगे जी मार्केट दबाते हैं ऊपर जा रही है, आपने जैसे ही लॉन्ग किया, सॉरी शॉर्ट किया, मैं तो शॉर्ट किया, अब लॉन्ग किया, प्राइस वहीं से रिवर्स शुरू कर दिया, ओ जी मिड बैंड तो दूर था, तो फिर आपको ले जाएगी वो। तो डिसिप्लिन ये है, यहाँ पर बैठे, यहाँ बाय लिमिट लगाएं और अपनी। अब हमारा क्या डिसिप्लिन, हम R1 का वेट कर रहे हैं। ये आप नंबर है आपका R1, तो 50 I will take the R1 upper limit even higher if मैं 89 की तरफ से लूँगा, वहाँ से सेल करेंगे। अगर आपने यहाँ से मैं अभी बताता हूँ R1, एक सेकेंड। सिर्फ और सिर्फ मसला ये आज ये है कि R1 और R2 का गैप बहुत कम है। देखें 89 के बस थोड़ी देर बाद ही 5601 खड़ा हुआ है। So if Nasdaq goes to R1, वो 560 Nasdaq जा तो रही है थोड़ी थोड़ी। So either you wait on your areas or नहीं एक एरिया ना, R1 83 से, हाँ देखिए यहाँ ये गैप बहुत छोटा है ना R1 और R2 का, तो अगर ये पेनिट्रेट कर गई तो बेटर ये नहीं है कि मैं R2 ले लूं, अगर गई तो $100 divided by 10 points. I need the price to go. आ गई सर, मिड बैंड पे आई, पिक किया अगर किसी ने, और वहां से आपको 2 पॉइंट दे गए। कहाँ मिड बैंड ऊपर लग रहा था ना, आप कह रहे थे आनी ही नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी पीपल यही करते हैं, वो कहते हैं यार प्राइस इतनी ऊपर खड़ी है वो कैसे नीचे आएगी, वो आके यही आपको टच किया 2 पॉइंट दे गई। नो ये 18 साल में हम यही करते हैं, ग्रीन टू बाय, रेड टू सेल। आपको 4 लेक्चर में यही बताया गया है, चार्ट देखें, ग्रीन है तो बाय कर लें, रेड है तो सेल कर लें। सर इस सिनेरियो में तो वेट करनी चाहिए ना, कि मिड बैंड है पर ऊपर है तो बाय तो बनता नहीं। नहीं अभी तो बाय हो गया, आपके 2 पॉइंट भी निकल गए थे। अभी तो सेल नहीं करना जब तक बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज होगा, तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा तो मैं सेलिंग में जाऊंगा, उससे पहले नहीं। अभी एक हुआ है, दूसरा नहीं हुआ। अभी बैकग्राउंड कलर नहीं, अब देखिए मेरे 2 पॉइंट वहीं मिड बैंड से आ गए हैं, मैंने कोई एक्स्ट्रा 3 पॉइंट आ गए इस मिड बैंड से, 4 5 तो क्लोज किया, ट्रेड खत्म, डन, दैट्स इट।
क्योंकि वो जो रेड कैंडल है ना, वो मेजोरिटी पीपल वहां से डर जाते हैं कि ओ माय गॉड अब प्राइस नहीं, क्योंकि प्राइस जब तक बैकग्राउंड आपका नहीं चेंज हो रहा, स्टे इन बाइंग। SRES बन गया जी आपका 1510 में।
फिर वापस ले गए ऊपर SRES $556.
Trying to do night session. नहीं नाइट सेशन नहीं लूंगा मैं, R1 ही लूंगा. NQ सर ऊपर बहुत, अभी तो एटलीस्ट 622 को टापे तो देखता हूँ. हाँ जी यार मैं ऊपर लूंगा इसको. अगर नैस्डैक यहाँ से भाग गई ना तो नैस्डैक का नंबर अभी तो नाइट सेशन हाई आ रहा है. नैस्डैक में भी टाइम है 670 minus 70 divided by 5, 14. So 5571 minus plus 14. सर 89 ठीक लग रहा है. हैं? नहीं मैं शॉर्ट में रहूंगा वहां से ऊपर. हाई टू गो लो, क्योंकि जितनी स्विंग थी वो वापस आ गई ना. 5573 से 5521 गई और वापस वहीं आ गई. R2 इस वक्त तो नाइट सेशन के इर्द गिर्द घूम रही है. Right in between R1 R2. Let's see, because next 11 o'clock candle is 4 minutes away. It's 30 minutes, 15 minutes, 1 hour. So once we place the ATM order, we can still place around. No. The night session respect कर गया. नहीं तुसी 70 ओके एक टेक ऊपर आ रहा है फिक्र ना कर. है जी है. ओके ना
ये bottom of the bar चल गया था 2 points. All right, price is heading to R1 for both. Take it. And I hope all beginners have seen the videos, the how to use NinjaTrader on the super areas. Good. पहले ट्रेडो वेट का एग्रीमेंट साइन करने आप सुपर एरियाज की टीम के साथ चैट करें, वो आपका पूरा सेट कर देंगे परचेज के बाद.
So super AS में जो password username same रहेगा. सेम है वो तो. सर ये आपने बोला था ग्रीन में बाय करो रेड में सेल करो. नो इट्स फॉर यू. ग्रीन में बाय कर रहे हैं ना, मिड बैंड पे आती है, आप ग्रीन में बाय करते हैं. No, we are doing green में बाय जो करते हैं, buy कर रहे हैं, रेड तो में सेल करते हैं. लेकिन जो एरियाज हैं वो अपोजिट चलते हैं. एरिया में आपको yeah, I saw yesterday. yes. No, but we can. अभी देखिए मिड बैंड पे अगर आपने सेल लगाया था, दोनों मिड बैंड पे प्राइस आई, आपको उसने काफी प्रॉफिट दिया. और सिर्फ रेड में सेल करें, ग्रीन में बाय करें, बस ऑलरेडी आपके प्रॉफिट वहां से चल पड़ा. राइट. Right now I'm doing the ATM strategy in green, दैट्स फाइन. but once the color changes to red, I'm still ATM strategy red. Is that okay? ATM just will put in the profit and loss. That's all ATM does, nothing else. I know, Yeah. but Same ATM works for green, same for red. There's no difference. There's no red or green in ATM. This means when you sell, it will open stop loss and TP. When you buy, it will open stop loss. but I'm not doing just to buy on the mid band. Just when the color changes when sell. If that's not your doing, okay, whatever. If it's working for you, keep doing. Yeah. Do I have to change my tactics? No. If you're making profit, keep doing what you're doing. Oh. Okay, I'm looking around 2 ticks per, like 4 ticks is 2 points, right? In the S&P. Yeah, 2 ticks you cannot take. Yeah, 4. 4 ticks 4 minimum. Ticks, yeah, 4 ticks and 2 points. SRES setup 1:30:20. सेल बनेगा ना, सेल बनेगा क्योंकि वो हायर हाई नहीं बन रहा.
We have a higher high, higher low, and then lower high. So एकदम रेड हो जाए तो फिर सेलिंग की तरफ आ जाएंगे. Good afternoon. Hello, sir. Good morning, Ji. Long time no see. Business operation हो रहा है. Avoid करना था. SRE setup completed. Color of a भाई. ठीक ठाक, sir. Long time. Yeah, been a little busy. Very good. Busy is good. हैं? हाँ, लेकिन 2 आ गए, ऑलमोस्ट 1.5 आ गया, 10 आ गया, 63.325. लेकिन मैं हूँ डायरेक्ट SRES नहीं रहना, हूँ टॉप ऑफ द बार सेल कर सकते हैं ਅਸੀਂ या मिड बैंड ਤੋਂ, क्योंकि अगर ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਡਾਇਵਰਜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ. मेरा एक्सेस करोगे मेरे ना 14 और 14 का चार्ट चेक करो सही है. चार्ट्स नहीं आ रहे आ रहे हो तो चेक करो कि सही है कि नहीं. क्योंकि उधर सिर्फ और सिर्फ मैंने दियो एंडी डेस्क 167 correct. है आ गया 30 मिनट. सर एस 60 मिनट देने 144 वाला किधर है? वो नहीं है, ही है बस दोनों चार्ट इन्होंने सेट कर दो. तो तरीका है कि इधर जाके न्यू चार्ट ES 1440
ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ There are 240. ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ new chart 240. Let's do 60 days. Templates load. हेलो ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੱਕ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ लेकिन टॉप ऑफ द बार सेल किया SRES के और आपके पॉइंट्स बनने शुरू हो गए एटलीस्ट 2 पॉइंट तो नजर आ गए मुझे हमें ईमेल पे हैं it is what it is man I don't know what he's trying to it's okay if he wants to analyze stocks that's the price you gotta pay 150 US For me, they charge me a lot of money. Like, yeah 150 US per month he wants to do stocks that's the price for stocks man but he's not able to buy and sell. no but then he's gonna open a broker's account for that's the second thing so then you need own money like Wealth Simple this is just analysis so right so those who don't listen will pay the price that's all I ask for It's going to do it for some reason. futures no I think the whole predicament is gambling this is feeling not real exactly so ऑफ कोर्स पैनिक सेलिंग होती है ना बस सारे रेड देखते हैं दर 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 अब ये ट्रेड आपका 15 पॉइंट का यार सॉरी 8 पॉइंट का कितना लेना है ये I entered from 57 जैसे नाइट सेशन उठाया किसी ने मैंने तो नहीं लिया वो बल्कि उसी प्राइस से आई है जहां से आपने कैंसिल किया इट्स ओके मैं ऊपर बैठा हूँ 95 पे बैठा हूँ
नहीं आई तो नहीं आई, की करिए। नहीं नहीं नहीं, 1500 का आप ट्राई करो 780, so what is that? 1500 आप अपना अकाउंट बनाएं, पहले डिस्कनेक्ट करें, यानी पर बंद ना करें, नहीं नहीं, ये इसको खुला रखें, मुझे एनी डेस्क मैं सेट कर देता हूँ, एनी डेस्क। तो आपका डेमो अकाउंट 1500 का बना, एनी डेस्क आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगा, उस पर डबल क्लिक कर लें। दो पॉइंट आ गए आपके मिड बैंड से। प्राइस केम टू 5562 और टॉप ऑफ द बार आपका फिर चल गया 5562 से 4 पॉइंट मिल गया आपको। नहीं, आपके पास होगा, आपको डैनियल ने किया हुआ है, वो गलत चीज ना कर लीजिएगा, वो वायरस आ जाता है। आपके पास डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, जिस दिन आपने डे 1 किया है, एनी डेस्क पड़ा होगा। एक सेकंड, सॉरी, एनी डेस्क आपके पास नहीं पड़ा, तो हम जाएंगे anydesk.com पे। ये लिखा डाउनलोड, डाउनलोड एनी डेस्क। तो जब भी कभी मैं, डैनियल, कोई भी सपोर्ट टीम करे ना, तो आपको कंप्यूटर में आने के लिए हम कहते हैं एनी डेस्क करें। इस टॉप ऑफ द बार से भी आपको 8 पॉइंट मिले। तो जब आप ये एनी डेस्क खोलेंगे तो एक ये कंप्यूटर खुल जाता है नंबर, तो यहाँ पर एक नंबर ये मुझे चाहिए होता है। जब भी आप सपोर्ट से बात करेंगे ना, तो ये नंबर देना। हाँ, 1516 यस करें, और आपने हमेशा इस पर क्लिक करना है, वो लिखा है ना प्रोफाइल के नीचे, प्रोफाइल पे जाएं, ये सामने लिखा है, सिर्फ आपने इसको जाके क्लिक करना है, फुल एक्सेस, दैट्स इट। हाँ, अब माउस मुझे दे दीजिए, आई विल हैंडल। डिस्कनेक्ट। तो ये अकाउंट, इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा, सिम अकाउंट की वैल्यू 1500। तो ये अब आपकी वैल्यू 1500। तो अब आपका जो अकाउंट, लेट मी सी, इसकी वैल्यू, एडिट अकाउंट, ये देखें 1500 आ गया ना। अब आप इसको प्रिटेंड करें ये आपके 1500 का अकाउंट है।
एक और मिड बैंड आपका 3 पॉइंट देंगे, डन। तो जब आप करेंगे तो सिम 101 पिक कीजिए, सिम अकाउंट 1। अभी क्लोज कर सकते हैं। हाँ, मैं तो जा रहा था अभी वैसे उपाय बोलने। हाँ मैं आऊँगा तो बोल नया सीखने को मिलता मैंने तो सिमुलेशन मैंने ये बनाया ताकि मैं मैं तो दो स्ट्रेटजीज कस्टम सूट में ये वाला मैं लाया सीगा 4 के लाया सीगा चार चीजें रेजिस्टेंस ये वाला जैसे एरो So trading में account में SIM account 1 so that I know how much. that now you have 1500 in the account, and then you can play with it to see. So what is the stages, sir? FX, legend? No, first you do legend. Legend. You will do 2 stages, Okay, 2 stages. and then you will, if you get payout from then, you will go into take profit. Okay. So what's the next step? That's the next stage. Take profit and then you will go per dia. Per year. This is your starting. And if you make money from per dia, it means you can open up your own account. We can feel that you know how to trade. Oh. Legend 1 legend 2 profit per year profit and then next step. अभी मैंने यूज किया चलो क्रेडिट हो गया ना मेन बात हाँ ये चलो Today's high has been 19,611, on the top of the 19,373.
Thank you. No problem. Yeah, well, lost it, right? Yep, NDP is no longer Canada's official party because of not losing more than 12 seats. So that is done. Have you lost the 12 seats? Sorry? Have you lost the 12 seats? Less, yes. So this guy really kind of, you can, if you don't get 12 seats, you are no longer a party. He lost from his own coach. Yes. So
सर सारा काम ट्रम्प को जाना चाहिए, उसने हमें तंग किया, सारे कनाडा ने दोबारा लिबरल को ले आए. So I don't know who's gonna resign or not. In Pierre may not be a party leader. He's not resigning. That's a tough cookie. Pierre. But it is not almost like 23 seats extra. नहीं लेकिन एनडीपी से उठाई ना, तो लिबरल भी तो 20 सीट ले गए, तो एनडीपी वाइप आउट हो गई. Right, so it's okay. You do bad politics. Yeah, This is what will happen. Because the way I looked at always that the guy has a position. He's thinking that he will go on TikTok and start to do those viral videos. That's where I decided you're not serious about your job, right? This guy's resume. I don't like a lot of policies of any company. Conservatives have their problem, liberals have their problem. However, this guy's resume looks good. Carney. जिस resume की वजह से मैं इधर सिर्फ बाकी resume ठीक लग रहा है. आप अगर आप across the board TikTok पे देखो ना, कौन चीख रहा है? White person जो conservative को चाहता है और जो anti immigration है, वो इस वक्त सबसे ज्यादा चीख रहे हैं कि यार. लेकिन उन्होंने भी तो नेटिव इंडियन से स्टील किया है. उनका कौन सा था भाई? कनाडा तो किसी का नहीं था. ब्रिटेन आए, फ्रेंच आए, उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया उनसे. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये लोग भूल जाते हैं जब इंग्लैंड से आप लोग इंडिया इन्वेड कर रहे थे, लाइक वो भी तो बाहर से आके आपने लूटा यार. तो अब क्यों, अगर हम वापस आ गए तो मैं कल मैंने पॉडकास्ट में ये बोला कि नेटिव इंडियन से कोरोना लिया, रियल इंडियन वापस ले रहे हैं. ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है, इट्स ओके. क्योंकि नेटिव इंडियन से ही छेड़ा था ना, तो हम ये अब इंडियंस देखिए. So I know there's a lot of liberal stuff I don't agree with, especially in the school agenda, things like that. But you have to pick the less evil. So if you have to pick an evil, you have to pick a less evil. Now it's not like so. वो कह रहे हैं जी सिटीजन नहीं है, ये नहीं है सर, उसका रेज्यूमे अच्छा है और ट्रम्प को हार्ड टाइम देगा, बस ये मेरा एक था कि और मेरी कोई क्राइटेरिया नहीं था. My son is very much conservative, young kid, यहाँ का born है. तो वो हमारे 2 मेंबर लिबरल हैं घर में, एक कंजर्वेटिव. तो साइन लगा हुआ था मेरा लिबरल का बाहर लॉट पे. तो गोरा आया, उसने साइन उठाया, मेरे बच्चे को गुस्सा चढ़ गया कि यार कंसर्ट ऐसे तो नहीं करो. वो कहता मैं वोट ही जाके लिबरल को दूंगा इसकी वजह से, राइट. सो SRE set up in 1510. Let's see, but ये नीचे आएगी क्योंकि लोअर लो बना रहे. Whoever wins, like it's because Pierre does not have the quality to fight Trump. I like that's personally I believe that, and most people saw Trump inside Pierre कि यार अगर ये आ गया पता नहीं वैसा ही ना हो. तो खौफ की वजह से लोग लिबरल 10 दिनों में शिफ्ट हुए हैं. Yes. So नहीं देखिए, अगर आप ओवरऑल ठीक है इकोनॉमी बेड़ा अगर की लिबरल्स ने, लेकिन हर एक को 60 हजार जिन्होंने बेनिफिट उठाया, फिर सर्व दी कोविड को, अच्छा लिबरल्स हैंडल कर गए थे, राइट. सो बैंकरप्ट नहीं होने दिया कनाडा को. सो प्लस अभी भी हम किंग के नीचे हैं. वो जो है इंग्लैंड का, इनके 3 बच्चे रह गए ना, एक ऑस्ट्रेलिया रह गया, साउथ अफ्रीका और कनाडा. बाकी तो सारे हांगकांग निकल गया, इंडिया निकल गया, लाइक सो. लेकिन पावर तो उधर से आती है ना, जो गवर्नर उनका, सब कुछ उनका. तो that is sad, man. Imagine you like I don't know what will happen to those seats though. But personally speaking, I'm Indian. I don't feel bad.
नो लेकिन देखें किसी ने तो बेचारे ने खड़े हुआ था ना उसकी The पोस्ट. thing is that he Yeah. has got his, again, this is just Hmm. healthy debate, right? Yes, yes. Okay, because what he did, he wanted to bring the dirty politics. That's what he lost. Because Everybody was saying about his pension or something where he exactly. did. And then he's putting the TikTok, oh, I made money because of stocks and this and that. Come on, you're a leader. You should not be saying this thing on the public agenda. Then you go to that would not be. But still, But these 12 seats, like they will re-election होगा या मुझे नहीं they मालूम. will go independent, right? फिर उसके कोalition बन सकती है. ये 168 पे खड़े हैं इधर. 168 प्लस 10 इधर से मिल गए. पॉसिबल. हाँ तो अभी लिबरल स्ट्रांग है भाई. Because BQ, Quebec is all BQ, right? Yes, yes, yes. But at the end of the day, they need the support from Quebec anyhow. If they want to get their power, Yes. doesn't matter conservative or liberal. No, conservatives said they want support from separatists. Because if they cannot prove the like a majority and a BQ supports like a conservative, then there's still a chance that conservative can come into the power. But again, अभी tough time देंगे. No, they don't want to take support from It's conservative. separatists. हाँ जी सर. If you're pro-immigration, liberal is your party. Simple. There's no if and buts about it. And all of us are immigrants, right? So if the liberals weren't here, we would be like Australia. You know how much racism is in Australia? I visited there. एक देखें आप पाकिस्तानी, आप इंडियन, दो जगह में आप खुश रहेंगे, या इंडिया में या कनाडा में. बाकी दुनिया हर किसी का है. नहीं कि अमेरिका जाओ ना तो आपको पता लगता है रेसिज्म है क्या. ऑस्ट्रेलिया जाके देखें वो मुंह पे बेचते. इंग्लैंड में गोरा करता है, फ्रांस में. यहाँ पर यार किसी का दादा आया होगा, वो भी इटालियन ही है, वो भी किसी का नहीं, ये कंट्री है सिर्फ तो सारों का है. Especially like a southern Ontario. हाँ I don't know, where is it? एग्जैक्टली. सो My daughter just went to Ottawa, right? So what is like she feel a little bit of change over there, being brown. Right? हाँ. So like I feel a little bit of racism there towards the brown. But other than that, you're right. Because anybody cuts you off on a street, go back home. I just say अपने grandfather को कहो वो भी वापस जाए. वो कौन सा यहाँ पर कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की फिर 300 की हिस्ट्री है साल की. कनाडा तो बेचारा इंग्लैंड जाओ आपको गोरा कहेगा मेरा मुल्क है. यू नो जर्मनी जाएं आपको फील होता है कि उनका है. इवन यूएई चले जाएं हम लोग सेकंड क्लास हैं क्योंकि अरबियों का है ना. तो यहाँ पर आप सीना खोल के चलें यार. ऐसे की तैसी किसी को क्या जरूरत है हमें कुछ कहे. सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा टाइट हो जाए. That's all I ask for कि अगर आप क्राइम करो आपको पेनल डर हो के यार बस that's it. That's all Canada needs. टैक्सेस ठीक है यार. देखिए मेरी बात सुने, अगर आप यूएई में भी रहते हो और उधर जाते हो ना या यूएस में, बच्चे नहीं लोग पैदा करते. एक बर्थ देनी, मेरी सिस्टर के 2 बच्चे हुए, उन्होंने जाके पाकिस्तान पैदा किए. वो कहते हैं भाई यूएस में रहना और बच्चे पैदा करना बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ कवरेज नहीं है, यहाँ पर दांत का दर्द हो, किडनी का, जो आप जाओ यार मुफ्त है. Yes, yeah. It's only like what 3 months, and which is also unpaid. अगर आपका एम्प्लॉय पे करता ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नहीं पे करती. अगर आपको मेडिकल कवरेज नहीं है, you can get bankrupt in like a matter of seconds. So you have to work in US or like तो अब ये कनाडा से और यूएस यूके से बेहतर है. यूके में तो वो कहते हैं यार काम ना करो, हम घर बैठे 3000 पाउंड बेचते जाते हैं, काम ना करो बस. यू नो हमें जिंदा हमें तो ओवर. देखिए मिक्स ऑफ बोथ है ना यूएस और इसका, तो मीडियम सही है हम लोग. इट्स ओके मैन. Like healthcare is much better than Europe though. Yeah. It is free. In fact, यहाँ पे से because in fact I know a couple of people who had the open heart surgeries who came as a visitor. The hospital didn't charge a penny. Wow. Insurance thing? Maybe Okay, okay.
Reason why? Because they put the people as first. True, true. If you have a sponsor, then they will put your sponsor, but they give you almost like a 75. नहीं बल्कि बैक होम भाई यार बड़ा महंगा है बच्चों को पढ़ाना आप अगर Exactly. Have a great worker for you. हमारे 2 इंजीनियर्स इंडिया से हैं ना वो तमिल साइड से जो इसको राइट करते हैं कोड एंड द सैलरी इज अबाउट $1,200 US एंड दैट्स अ रीजनेबल अमाउंट और वो कहते हैं कि $500 से कम हम नहीं सरवाइव कर सकते जितने महंगे खर्चे घर का खर्चा बिजली का खर्चा राइट सो yeah so meaning you need $500 minimum to survive right so it's हाँ exactly अभी तो ये होता है कि पेरेंट्स के साथ रहते होते हैं घर पेड़ ऑफ होता है मैं लगा पूरी गोरवे ना पंजाबियों ने ले लिया दैट्स अमेजिंग मैं जाऊं ना हर घर एंड ट्रैक्टर खड़े हैं एंड तो कैसे को देख लें yeah तो कैसे बोलते हैं देशों में पूरा no I went to Blue Mountain right and you know who's spending South Asians like वही खर्च रहे हैं टिम होटल में भी वही है पिज्जा में वो गोरा तो आता ही नहीं है वो तो इतनी so अगर इकोनॉमी को किसी ने चलाया कोविड के बाद तो रियल एस्टेट में हम लोगों ने ही आगे थोड़ा इंडियन बच्चे सबसे ज्यादा काम करते हैं यस और पाकिस्तानी बच्चे नहीं है कोई और बच्चे नहीं है किसी और कंट्री के नहीं है इंडियन बच्चे सबसे ज्यादा काम करते हैं सबसे ज्यादा मेहनती वही है अब मुझे जो एक है कि I grew up with Kitchener right so the goal is somebody buys a home everybody contributes ये नहीं है कि अगर आप अपना कमा रहे हो अपना गा रहे हो भाई आपने घर के अंदर मॉर्गेज में डालना है ताकि हम घर पे ऑफ करें जल्द से जल्द so that was amazing to figure out anyway so let's see next 4 years Sir, Nasdaq में night session high लगेगी यार आया था 622 है ना नहीं यार 631 तक है हाँ पहले ही निकल गया 611 तक तो आया था जिस तरह ये झटके दे रही है वापस मैं सिर्फ उसी का वेट करूं तो R1 आ जाए R2 आ जाए और सर खाली बैठे हैं मैं सिर्फ वो न्यूज में शॉर्ट कर दिए तो 2 माइक्रो बस वही ट्रेड लगा हुआ लेकिन जिन्होंने मिड बैंड्स लिए अब ये पिछला मिड बैंड भी जो हायर हाई से आया बॉटम ऑफ द बार वो आपको प्लेंटी ऑफ नहीं वो एरर दे रहा है तो एरर दे रहा है तो अब आपको मैनुअली करना है नहीं वो मेरे ख्याल सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट हुआ है तो उस वजह से वो एक्सेप्शन का एरर देता है हैंडल्ड जी भाई सर मैं फूका मार देना और की मैं कर सकता आप सारे डाउनलोड करें टिकटॉक और वो देखा करें फारिग टाइम पे ट्रेड को छोड़ें जब प्राइस आ जाएगी तो सेल डाल दे क्योंकि जितनी देर चार्ट्स देखे रहेंगे आप करें लो जी ऊपर जा रही है बाई कर लें लो जी नीचे जा रही है मैं तो जो न्यूज आई सी ना 2 माइक्रो सेल किया वो 75 बने मैं क्या लाओ जी ई है दिवस नहीं उस तरह फिर नैस्डैक दे देती है जो माइक्रो एंड क्यू के वो तो घूम रही है ना कहीं पर अगर आपने अच्छे पॉइंट्स उठाने हैं तो R1 एटलीस्ट वेट करें एटलीस्ट R1 का एक है प्राइस आई मिड बैंड पे 2 पॉइंट दिए खत्म दैट्स इट इतना सा काम था समटाइम नहीं 70% चलता है 30% नहीं चलता आप सुबह 9:30 से काम करें होता ही है कि आप सारे हर ही मिड बैंड उठा रहे होते हैं 1 2 3 4 उसका भी एक रूल है प्राइस हाई से आए प्राइस एरिया से ना आए अब SRES बन गया जी 15 टन में हाँ
नंबर वो नंबर होते हैं कि उस प्राइस पे कितना ऑर्डर लगा हुआ है। हाँ, वो नंबर जो होते हैं ना उस पे बहुत ज्यादा ट्रेड लगती है। हाँ जी। अगर जैसे साइड में अगर 90 लोगों ने ऑर्डर लगाए हैं ना, अगर उस नंबर पे ट्रेड डाल दो नहीं, लेकिन आपको तो सिर्फ एक लाइन नजर आ रही है ना, वो हर लेडर पे हजारों ऑर्डर लगे हुए हैं। लेकिन अगर ज्यादा नंबर ना डाले ना, अगर बहुत ज्यादा नंबर्स ना देखे, सिर्फ जो एक ही नंबर पे आता है, अगर वही नंबर देखें, अगर उस पे 70, 80, 60, 40, 30 लोगों ने नंबर डाला है, अगर उस पे ट्रेड डालें तो उसका रेशो 80 to 85%। नहीं, ठीक है सर, एज लॉन्ग एज आपको हर ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस पता हो ना, हाँ, आपके लिए कोई मसला वो नहीं। स्टॉप लॉस सिर्फ एक पॉइंट का नहीं, 1 पॉइंट जरा बहुत कम है जी। एकदम वो चार। अच्छा, किसी भी फंडेड कंपनी में 4 टिक से कम प्रॉफिट नहीं ले सकते आप। वो आप नहीं, पर डिया में 1 टिक भी ले लें कोई, बाकियों में आपको मिनिमम 4 टिक प्रॉफिट लेना है। 1 पॉइंट। हाँ, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड में निकल जाता है। ठीक है, नो 4 प्रॉब्लम। सेकंड। लेकिन अगर वो ज्यादा परसेंट लोगों ने डाला होता है ना, उधर से 4 टिक एक सेकंड में निकलता है। ऐसा ही, और स्पेशली नैस्डैक में, स्पेशली ईएस में भी। ईएस पे और वो सेल पे, शॉर्ट पे। अब अगर आप देखें 1510 का चार्ट, प्राइस हायर हाई से आई, आप मिड बैंड पे बैठे हुए थे, प्राइस ने आपको यहाँ से पिक किया। नहीं, ये लॉन्ग था, ये लॉन्ग था, हायर हाई से प्राइस आई है, मिड बैंड पे आपने एंटर किया, आपको 4-5 पॉइंट। तो आप ऊपर जाते हुए 2 मिड बैंड ऊपर गए हैं, राइट। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द प्राइस टू गेट टू somewhere around 95 is my number. तो आपने, हाँ, तो आपने बस अपने लिमिट ऑर्डर लगा के रखना है ना। यस, Is there a constitutional pathway for? Well, the day after the election, and I'm here to let you know that I just got another 4-year term. I'm making fun of every single jabroni in the Liberal Party and Conservative Party. यार आपका एक आईपीएल का प्लेयर बहुत हिट हो गया कल। सूर्यवंशी भाई 35 balls 14 years। हर टिकटॉक उसकी आ रही है, चाइल्ड। नहीं, वो मेरा ख्याल है इंडियन टीम में अपना पॉइंट सेट कर गया। मुझे खाता क्या है, 14 साल के बच्चे के तो बाजू में जान ही नहीं होती कि इतनी स्पीड से छक्का मारे वो। But if you like to face a ball that's coming at you 100, like 40 kilometers an hour, you face it. और वो भी 35, पता नहीं वो क्या खा के आया यार। No, the first match he played, he wants to make 100. हाँ, So उसने पहली बॉल पे छक्का मारा। रो रहा था, so out हो गया। पहली बॉल पे छक्का मारा। But IPL brings out the best of the best, right? So that's really.
bred, he delivered at age 14 and just 14. Last Zionists. Combien? What is Daniel Smith doing to you? I mean, your numbers are tanking. Everyone sees you as Trump light. And she's down there in Florida hanging out with Trumpers who are laughing about Canada becoming like a Puerto Rico state, or that we're just a silly country, or when Trump comes to invade us, we'll be welcomed like liberators. It's really pissing people off. You know that, here. So what's she doing? Is she doing this for? Positivity. Let's have a look at conservative headquarters now. Let's see what she's doing there. That is Premier just told Prime Minister Mark Carney that Albertans will no longer tolerate the treatment of the federal. For the first time in history, another prime minister. ये पेयर की दो राइडिंग थी, दो जगह से खड़ा हुआ था ना? No, एक ही है। नहीं एक दो, क्योंकि वरना फिर आपके तो सीट ही नहीं है कॉमन्स में अगर आप पेयर फॉलोवर सीट्स एक ही सीट से हिसाब से इधर दो जगह नहीं खड़ा है।
इंडिया पाकिस्तान जैसा नहीं है। That's just a little bit embarrassing. You lose your own seat where you stand from, right? That's means not popular enough. But he's winning from almost like 9 times. It's unfortunate, you know. His words are a little bit harsh, but the baby boomers have now this one. The Brampton are mostly closed. The Chenkuzi one is almost 250 votes. The guy won, Liberal. 250 almost. Wow. Yeah. That's close, very close. Pierre has to talk to Trump. Because of him, he lost. Yeah. That's all I can say. Yeah, he was 40 points up. I don't know how he can mess up from that much lead to losing election, but yeah, the Trump makes him to lose. Everybody's scared and Trump ऐसा कर रहा है, ये भी ऐसा करेगा बोल के. और आखिरी छक्का भी राशिद को मारा उसने. He is not looking anywhere. He just hit it. The debutant just Jana, that's somebody's name. The guy. I just feel how much like wealth he can accumulate from now here, like the brand ambassadors, the cars. Next time he's going to. अच्छा. अभी लेगा 20 crores हो जाएगा next time. I know, अब तो फीस बढ़ गई. अभी ऋषभ पंत को देखो 21 में करेगा, कुछ भी नहीं कर रहा है. Okay. Okay. अब क्लोज का बटन ना दबाएं, सामने जाके ना ऑपोजिट जिस भी डायरेक्शन में लॉन्ग है तो वहां जाके लिमिट ऑर्डर लगा दें ताकि उस प्राइस पे आके निकले. हाँ हाँ वहां नहीं पहुंचा, ठीक है, उसको क्विकली ऊपर मूव कर दें. हाँ ये देखिए, मैं अभी आपको डॉम से करता हूँ. यहाँ पर मैं करूँगा सेल बिड करता हूँ, ठीक है. और अगर पहले एटीएम सेट करते हैं, एक सेकंड. बाय बिड, बाय आस्क किया, ये एटीएम खुल गई, ठीक है. अब ये यहाँ नहीं पहुंची तो आप इसको भी नीचे ला सकते हैं और इसको भी ऊपर कर सकते हैं. तो आप अपना लिमिट ऑर्डर नीचे ले आए, क्योंकि अगर आपने 50 देखे उसको खींचे. क्लोज ओनली फॉर दिस ट्रेड. लाइक देखिए, अब मैंने वो नीचे किया हुआ था तो उसने 2 ही टिक्स दिए और बाहर आ गया, राइट. सो यू कैन मेक इट एज टाइट एज पॉसिबल. इसको ये देखें और बिल्कुल ब्रेक इवन पे ही आ गया, निकले. सो क्योंकि क्लोज दबाएंगे ना, वो जो भी प्राइस उसको मिली उसने आपने बाहर, क्योंकि हाँ यस 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 यस. तो इसलिए आप उसको लाओ कि यार 150 ना दिखाओ, 100 तो दे दो मुझे, 50 तो दे दो. नो प्रॉब्लम.
He never run the election, they say. Mark Carney. Mark Carney, he never run election. Who? Mark Carney. Yeah, he वो तो businessman है. तो देखो कैसा किस्मत करो. नहीं देखिए मेरी बात है, वहाँ इस वक्त जो पीयर के सामने को बिल्ली भी खड़ी करते थे वो भी जीत जाती, क्योंकि वो ट्रम्प के अगेंस्ट. वो जो भी आया उन्होंने कहा भाई जी लिबरल को वोट दो, बस ट्रम्प, वो कोई भी आ जाता ना, सिर्फ ट्रूडो ना हो, बाकी उस यही तो मैं कह रहा हूँ. देखिए उन्होंने 20 सिर्फ वो थोड़ा सा उसने ट्रम्प ने गलत टाइम पे कह दिया 51 में स्टेट, और वो फ्लोरिडा में बैठा था उस दिन, तो उन्होंने कहा ऐसी की तुम ट्रम्प सपोर्ट करते हो, मैं तो मार्क का इसमें कमाल नहीं है, सिर्फ ट्रूडो के खिलाफ जो भी आ जाए वो कहेंगे हम इनको जिता रहे हैं. Alright guys, 12:06 Europe session just closed. देखिए अभी Euro session just closed because in London the so 12 o'clock candle is 1 hour candle, 30-minute candle. We're still waiting for price to go to R1. आपका हो गया मल्टी चार्ट्स वगैरह सेट हो गए सारे एएमपी के? धन्यवाद, ठीक है, ओके. R1 की तरफ जा तो रहा है, ऊपर वाला R1 के ऊपर से भी इनफैक्ट ये नंबर 5596 जो 60 मिनट का मिड बैंड मैजिक बैंड का मिडल 5589 पे खड़ा हुआ है. हाँ ये 7 तो आ गया जी. ये सर 5589 में ले रहे हैं, 89 उससे आला. Just for the safer side, so you always go in the middle. So the value is 83 to 89 is here. It is so that the classes are now. So if you take like something in the middle. 19165 यस. हाँ लेकिन वो वैलिड है क्योंकि अभी S2 की तरफ आई नहीं, तो वो आई. हाँ 631 के ऊपर जाएगी तो हमारा एरिया बनेगा ना, लेकिन उससे ऊपर जाने दें, 631 के ऊपर जाए, नाइट सेशन के ऊपर जाए तो वो 600 को ब्रेक नहीं कर पा रही. हमारा एरिया 670 है.
वो ऊपर एफ लिखा हुआ है, एफ पे क्लिक करें, वो ऊपर है। नैस्डैक नहीं 600 तोड़ रही है। अभी 95% हो गया तो नीचे आएगा। नहीं, अभी और जा सकता, एरिया बहुत करीब खड़ा है, 89 पे आ गया, 89 पे देखते हैं। अभी तो ऊपर ही जा रही है नैस्डैक। एनक्यू 670 का वेट कर रहा हूँ सर, 670, 670, R1 वहाँ खड़ी है। ये फर्क बहुत कम है, 30 पॉइंट्स का ही है, 676। एग्जैक्टली उसी फिगर से 77 से ही आया यार। आज ये सही सही तंग कर रहे हैं। यहाँ से ऊपर जाएंगे। अगर मुझे पता होता मैं $1 मिलियन लगा देता आंखें बंद करके। देखिए मिड बैंड पे आई हुई है, खड़ी, आपका ऑर्डर पिक हुआ होगा। और दे गई 2 पॉइंट आपको, डन, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अपनी लाइन पे खड़े ने, प्राइस आएगी मिड बैंड से, उसने 2 पॉइंट दिए हैं।
नहीं नहीं हर चीज़ ग्रीन हो जनरली प्रोबेबिलिटी मिड बैंड ਦੀ बढ़ ਜਾਂਦੀ है ना वो दोनों ओए ओए All right, I'm still sitting at 89, so I gotta wrap it up. 12 o'clock. See you guys tomorrow. Enjoy. So R1 is valid, S2 is valid. No areas are still valid. ये देखिए बॉटम ऑफ द बार भी चला, मिड बैंड भी चला, 2-2 पॉइंट्स के लिए 5-5 माइक्रो भी हो तो $50-50 बाहर आ जाते हैं. सिर्फ अपनी बस स्टॉप पे खड़े रहे, वहां आएगी आपको ले जाइए. ये नंबर बड़ा मुश्किल है 77 वाला ना, 4 दफा टेस्ट हुआ है. अब SRES बन रहा है इस साइड पे. क्योंकि वहां मिड बैंड है, मैजिक बैंड का मिड बैंड वहां खड़ा हुआ है 95 पे, तो ये पास चेंज हो रहा है. SRES चल गया, वो नीचे की तरफ चल पड़ी. वो SRES उसने दिखाया लोअर हाई और गाड़ी नीचे की तरफ आ गई 2-4 पॉइंट. बड़ा प्यारा SRES. I didn't take it by the way. फिर वही राइट क्लिक करना है, रीलोड करना है. बार बार चार्ट मूव करते हैं तो वो राइट क्लिक करके रीलोड जा स्क्रिप्ट. To wrap it up, 30-20 का मिड बैंड अभी टेस्ट हो रहा है.